before we can start, there are a few disclaimers which are extremely important. Whenever we are discussing any philosophical topic, it is very important to set the disclaimers. Jazakumullah khairan. We need to have, and I met my teacher recently in Makkah, and he told me that if you are approaching as a student of knowledge any philosophical or psychological topic like this one, you need to have two honor, izzatan, two honor. One is the knowledge of belief as a Muslim. One is the knowledge of that you are a Muslim, so you need to have that pride and confidence. And second, al-izza al-ilmiya, the honor of sacred knowledge. Because once you are going to get lost in the technical terminology, which Shazib actually have showed you some of those terminology, you will be mesmerized. You will say, oh man, epistemology, ontology, all these ologies and isms, we're going to find it very attractive because we are listening from a slave mindset. Someone else is defining language for us. So you need to have pride of Iman and pride of religious sacred knowledge before you pursue and deconstruct any of these issues. Is that clear? Okay, since he brought Andrew Tate, how many of you, sisters are listening, right, also? How many of you think Andrew Tate is a good brother? Come on, sisters are not looking at you, so you can raise hand, yeah. You think he's a good brother. How many of you think he is bad brother? Okay, few of you are thinking. I wanted to make a point, not about Andrew Tate. Postmodernity have put a question mark on how do you define good and bad. That's what postmodernity is. Because when he was saying that many perspectives are coming, when you have countless perspectives, then Quran also gives you perspective, and you will say, okay, Quranic perspective is a perspective, that is postmodern. If you are postmodern, how to check whether you got impacted with postmodernity or not? If you open the Quran, you will see one ayah, you will say, okay, there are so many perspectives. Podcasters hai, Geo News hai, there's Andrew Tate, there's Candace Owens, there's so many perspectives. Quran also have a perspective. You have become postmodernist. Because Quran doesn't have a perspective, Quran have the perspective. Quran is not a opinion, Quran is the final saying of Allah subhanahu wa ta'ala. So to summarize the entire postmodernity before we will start this, if you will see, okay, it's not here, but I'll show you. Modernity came as a reaction of Christianity, and I will explain how. Modernity came as a reaction of Christianity, and postmodernity came as a reaction of modernity. Let's start with this. Modernity, as a philosophy, came as a reaction of Christianity, and postmodernity is a reaction of modernity. So if a person wants to do a PhD in Abu Bakr Siddiq's life, can he ignore Prophet's life? And if you want to do a PhD on Prophet's life, can you ignore Quran? So you cannot understand postmodernity properly if you don't know the background of modernity. And you cannot understand modernity properly if you don't know what happened to Christianity that resulted in modernity and consequently postmodernity. Is that clear? So I'm going to take a very quick 101 5-minute route to explain what happened to Christianity, what happened in modernity, and then now we are in postmodernity, and then what challenges it imposes on us, inshallah. Okay? So let's start. Do we have whiteboard? No worries, inshallah. Yeah, I'll just, okay. So it came in a way that in Europe, there was Christendom. Church had its say in political affairs, social affairs. That's Christendom. Something happened to the church authority or totalitarian Christianity कि उन्होंने जीसस को चर्च के अंदर बंद कर दिया और कहा कि आप बाहर आएंगे तो बड़े वायलेंस होंगे क्योंकि रिलीजन के नाम पे वायलेंस फैलते जा रहे हैं. Have you heard this narrative? Okay, this is the famous narrative, but not my narrative. Okay, because postmodernity is all about infinite narratives, right? Okay, father of liberalism कौन है? हाँ पता है कौन किसी ने कहा? Yeah, John.
जॉन लॉक, तो यहाँ निकाले लॉकियन पर्सपेक्टिव. ओके, लॉकियन पर्सपेक्टिव ये वाला पर्सपेक्टिव देता है. Man, you know what? There were so many fights between Catholic and Protestant and Lutheran churches. We reduced the role of church, into the place of worship, so that we can live peacefully under the state. That is John Locke's perspective. That is Thomas Hobbe's perspective. You don't need to write these names. They are not important. I'm just telling you. यही perspective आपके यहाँ के secular लोगों का है कि मजहब से violence होता है, हमें मजहब को प्राइवेटाइज करना है, इंडिविजुअलाइज करना है या नेगेटिवाइज करना है. आई विल एक्सप्लेन हाउ दैट इज, ताकि स्टेट के पास ताकत रहे एंड वी कैन लिव पीसफुली. इज दैट क्लियर? मैं भी मॉडर्निटी पे नहीं जा रहा हूं, बता रहा हूं क्रिश्चियन डोम ने रिलीजन का इम्पैक्ट कम कैसे किया. ओके, लेकिन अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है, वो ये कि नैरेटिव सही नहीं है ये. क्योंकि जब जो जंगें हुई थी 16-17 सेंचुरी में यूरोप के अंदर, वो सिर्फ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान नहीं हुई थी. कैथोलिक की वॉर कैथोलिक से हो रही है, प्रोटेस्टेंट की वॉर प्रोटेस्टेंट से हो रही है, जिसका मतलब है नैरेटिव हमें गलत बताया गया है. माइनॉरिटी नैरेटिव वेस्ट के अंदर ये है, वाइल हल्लाक साहब को आप देखें, जॉन मर्शमायर को देखें, हमारे अपने अल्लामा इकबाल को देखें, उन सब का पर्सपेक्टिव है स्टेट इज नॉट द सॉल्यूशन टू द रिलीजियस वॉर, स्टेट इज द कॉज फॉर द रिलीजियस वॉर्स. बिकॉज स्टेट ने रिलीजन से ताकत ले ली कि हम डिफाइन करेंगे क्या चीज डिफाइन करनी गुड और बैड को, और रिलीजन सिर्फ एक चर्च में महदूद हो जाएगा, रिलीजन की कैटेगरी में महदूद हो जाएगा. इज दैट क्लियर? बाय द वर्ड रिलीजन, व्हाट्स द डेफिनेशन? ओके, Man rawahu haza. Who narrated this? There are 12 definitions of the word religion. None of them is agreed upon. And a former Harvard professor, William Cartwell Smith, who wrote a book, Meaning and End of Religion, says we should drop the word religion because it's highly problematic. If you want to write a book, I can just give you the references of the book, because in 2-hour session, what we will explain. This is the appetizer. Must-read book is Myth of Religious Violence. Write it down if you are a reader. Myth of Religious Violence by William Kavanagh. He actually explained this, that the word religion did not even exist before 16th century. It was religio from the Latin word. For Christianity, for Islam, they use faith. Faith. Why religion came? Now, whenever the word religion came, the dichotomy of that religion is used as an opposite of secular politics. Because that's Christian understanding. Whatever is religion will be inside of the church or places of worship. Whatever is non-religious, secular politics, that is external, outside of the church. Is that clear? Okay, who's controlling the society when church is privatized? Secular. And we're going to know what is that secular. Whatever is mythical, that's religion. Whatever is logical, rational, that's secular. That's a by default dichotomy of Christianity from religion and state. Are you following? And now the tough pill is coming. Not red pill, tough pill. Whatever is bad, most likely it's religion. Whatever is good, most likely it's... Shall I give you an example? If you will do a violence and cite religious reason or J word, you are a terrorist. If you will do the same violence on the name of a state, you will get gold star award. So who will define what is good and bad in violence? Not morality, not your religion, but if you're doing on the name of a state or not. Did you see that? Are you understanding? So in Israel and Hamas, you can clearly see who is right and wrong if you are coming from this perspective. One is trying to do from the state. So there, you would never hear in the mainstream media terrorism, because that's national security, collateral damage. The other people who are selected by the people, but they were never endorsed by the other side, they're always terrorists. Even though their violence is lesser, but they are always terrorists. So who will define? And obviously, as you said, as Sheikh Shazib said, it's always about controlling the language. Are you following? इसकी बहुत सारी मिसाल है कि जब भी आप
society में interaction को देखेंगे, you're going to see people will be quick to blame religion, the category of religion. I actually was playing cricket. I came on Thursday or Wednesday. I was playing cricket with my cousin after 3 years. So my brother said, "Why don't you bowl fast?" Well, I used to bowl very fast when I was a teenager. So I said, "Okay, I will bowl." And then I did something to my back. While I was playing, one of my cousins lost his phone. So the first thing the other cousin said, maybe madrasa ke bacche aaye the le gaye. Literally, the first thing my cousin said, and then we found out the phone actually was somewhere else. So no madrasa baccha came and anyone. But I was just listening to their conversation. Maybe I'm an outsider right now, even though I was born and raised here, but for the last 15, 20 years, I'm not here. Too quick to blame religion category. Because why they do this? Because remember, secular took the power from the religion and gave it to state. Will Donald Trump praise Biden? Because he took the power from the Biden. Will Nawaz Sharif, Shahbaz Sharif praise Imran Khan? Or will Imran Khan praise? Because they took the power. So secular category will never praise religion because they both compete for the social control and political control. Is that clear? Secular will only praise, politics will only praise religion if religion category says yes, boss, to the secular. And the moment you are trying to challenge, you better reform yourself under the state requirements. Is that clear? This was the situation where modernity was born. Now you're coming to modernity. Now religion role is being reduced and negativized in the church. Now the problem is, back in the days, politics, society, economics, there was also run by a church. Now church is reduced to Jesus is reduced to Jesus' teachings are reduced to the church. Now how you will run the society in Europe? Church is gone. How you run the political system? What are the women's rights? What are the men's rights? How the economics will run? Church have no influence now. Now it's coming, all of that is coming now with reason. Oh, we have empirical science. We have scientific revolution. We have rational sciences. We have Newton and Einstein and all these great minds of the Ummah. And then we are going to run. So modernity naturally disconnect from religion and they focus a lot on reason. That we can live in a peaceful society with reason. Because we don't want to go back to the violence caused by the religion. Is that clear? Okay. But is that true? Is that true that there were more violence caused by religion or more violence is caused by non-religious wars? What do you think? Do you think that the West, especially when I say West, it's a geographical location, Euro-American West. Euro-American West in the last 125 years having global hegemony. First thing Brits and then now America. The last 125 years, how many people have lost their lives? How many people, you can look at me inshallah, how many people have lost their lives in the non-religious wars in last 125 years started by Europe or America? Tell me. Yeah, how many? William Kavanagh says 70 to 110 million. Only Second World War, 38 million. Only in America, colonization, Brits killed almost 56 million Native Americans. In Afghanistan and Iraq, post 9/11, how many people have lost their lives? 4.5 million people. Let that sink in. 4.5 million people have lost their lives in Afghanistan, Iraq, Syria, and some in Pakistan. That argument basically fades away when you say we can have a more peaceful society, less violent society, if we can reduce the role of religion. Is that clear? Because then greed, human greed will come. You want to extract resources, and there are many other reasons. So, when modernity came in 17th, 18th, 19th century, how to run politics? Liberalism. Liberalism went too far, reaction is conservatism. How to run economics? Capitalism. Capitalism exploits, reaction is socialism and Marxism. How to give rights of women? Feminism first wave, 1920. Feminism went too far, toxic masculinity. Because nothing is coming from religion, so they are going from one extreme and pendulum to other extreme and then pendulum to other extreme.
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. When you are being deprived of the divine light, you will be lost in darkness. Are you following? Now this promise of the modernity, that we can solve everything with reason. We don't need to go back to the dark ages of religion. Look at the language. The term enlightenment in Europe is defined as a time when they let go of religion and they focus on reason. For us, this is an endarkenment when you are actually away from religion. Because for us, Allahu nuru samawati wal ard. But we use this. Even I've heard the politicians, when I was here, General Pervez Musharraf was leading the country. He used it a lot, enlightenment, Roshan Khayali, enlightenment, Roshan Khayali. And he had the same conception, we have to go away from the religion. But look at what he did and what happened to him. But anyway, reason. So in late 20th and 21st century now, people start looking at loopholes that you did not fulfill your promise. You said we can have a peaceful society after we let go religion. But we have seen increase in chaos in economics, in politics, in social life. Do we have more issues of sexuality and marital life? Absolutely. Do we have more chaos in the political violence? Absolutely. So now this became a problem. Then a third reaction came, and now we are moving towards post-1960, and that is called postmodernity. Postmodernity says, you modernist, you promised us that you were going to have a peaceful society. You're going to solve everything with the reason and with the truth with the capital T. But now tell me whose truth you're talking about. Everyone have a different truth. Because if you are not taking guidance from religion, then who will decide what is right and wrong? You said your reason, but whose reason you're talking about then? Everything can be deconstructed. That's the essence of postmodernity. Everything can be deconstructed. जो भी आप argument लाएंगे, मगर लगाया जा सकता है उस पे. कभी आपने news shows देखे, podcast? No matter what argument you say, magar, and then you will deconstruct the argument. So everything can be deconstructed. Every argument, every reason, every truth can be deconstructed. So it means everything is subjective. हर चीज ज़न्नी है, हर चीज subjective है, हर चीज पे शक किया जाएगा. किसी भी चीज में truth कुछ है ही नहीं. There's nothing like truth. Obviously, information overload has a role to play. Back in the days, आप एक TV channel देखते थे, PTV. That was 20 years back. And now you have thousands of YouTubers along with the digital media. And then, so this is the essence of postmodernity. Neither will go back to religion, nor will go back to reason, because it's very speculative, subjective. Then how are you going to define things? So now I'm going to define as I like. Because आपने अकल का इनकार कर दिया, rational. आपने नकल, कुरान, हदीस, religion का इनकार कर दिया. Now how are you going to run the society? Basically, however I like. Are you following? यहाँ पे आपको biology के कोई student हैं? Okay, psychology, psych major. तो कर क्या रहे हैं बाकी? Okay. ना natural science ना social science तो हो क्या रहे हैं यहाँ पे? हाँ, चाहिए. So हर एक साथ तो गुजराती बन जाना आप लोग फिर. ओके, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ. 1960 से पहले जब मॉडर्निटी उरूज पर था, साइंटिफिक, बायोलॉजी, एम्पिरिकल दे रहा, एक बंदा जाता है डॉक्टर के पास अमेरिका में, एंड ही सेज कि आई एम अ वुमन ट्रैप्ड इन द बॉडी ऑफ मैन. I'm a woman trapped in the body of man. तो आपने कहा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. अच्छा, अब वो किसी भी तरीके से वो कहेगा कि अगर ये प्री पोस्ट मॉडर्निटी की बात हो रही है तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा कि वी नीड टू गिव यू मेडिसिन व्हाटएवर, बट वी नीड टू चेंज योर फीलिंग बिकॉज द फैक्ट इज द बायोलॉजिकल ट्रूथ इज द फैक्ट. रिलीजन आर्ग्यूमेंट वो भी नहीं ला रहा, गोरा है. बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज फैक्ट. जेंडर्स आर बाइनरी. You are male, so we'll change your feelings. Your feelings have to be in line with your body, okay? Because body is a fact, biological fact. Now psychology trumps biology. If same brother goes to a doctor
in 2020 or 2025 and says, I'm a woman trapped in the body of men, he will say, let's do the surgery and let's change your biology to psychology. समझ आ रहा है? Because the primary moral yardstick is not biology, it's feeling. तभी साइकोलॉजी पे इतना जोर दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं कितना मनी इंजेक्ट किया जा रहा है. तो ये साइकोलॉजिटाइजेशन भी एक एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निटी के पीछे. अच्छा, इसमें लॉस नहीं हो जाना. वी हैव टू कम बैक टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट आल्सो, बट दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन. And this is such a stupid idea, by the way. let's begin with that. I usually give this example in America. स्पीड लिमिट क्या है यहाँ पे पाकिस्तान में रोड्स पे? चीज़ तो होती है ना, आप लोग तो माशाल्लाह जन्नती आदमी हैं. लेकिन वैसे क्या होती है? 100 kilometers. Okay, so if you are driving, let's say 150 kilometers, because you want to go Jannah very quickly. Let's do this. And then one police guy who is trustworthy, who doesn't take bribes, because I know I've lived in Pakistan. He comes to you, he pulls you over, and he says, why were you driving 150 kilometers per hour? The speed limit was 100. Can you say to him, I feel like a fast driver, therefore I identify as a fast driver, and if you won't allow me to drive fast, it means you are a hater and a bigot who denied my identity. He will slap you, most likely. Because you are just making this false framework, giving your feelings central authority. By the way, let's bring Quran. Allah says, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Rasulullah, and twice Allah says this. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, have you seen a person who have taken his whims and desires and feelings as his God? Subhanallah. Quran have solution for so many things, subhanallah, even the contemporary issues, if you see Quran from that lens. Okay, this is in the essence of postmodernity. So postmodernity, उसका खुद का कुछ सच नहीं है, वो बस आपसे आर्ग्यूमेंट जीतना चाह रहा है, हर चीज़ को डिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू सिस्टम कोई नहीं बना हुआ. वो खुद अपनी फीलिंग्स की वर्शिप कर रहा है या फीलिंग्स को माने जा रहा है, उसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है. तो इसका इस्लामिक सोल्यूशन स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? इस्लामिक स्टैंडर्ड ने हमें, इस्लाम ने बताया, रिलीजन की गाइडेंस दी है कुरान सुन्नत के मुताबिक, बट देन इस्लाम गेव अ रोल ऑफ रीजन आल्सो. यस, एंड इन दोनों के साथ मिलकर हमें ट्रूथ और बैड को पहचानना है. इज दैट क्लियर? अब अगर आप इन दोनों को सब्जेक्टिव करके रिजेक्ट कर देंगे तो आप ट्रूथ और बैड को कैसे पहचानेंगे? तो दैट्स व्हाई इवेंचुअली इन द मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, इन द करंट सोसाइटी, दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी आर्गुमेंट्स. इफ यू विल आस्क सिस्टर व्हाई यू आर टर्निंग फेमिनिस्ट, because my opinion is this. If you will ask Andrew Tate, he must have his own opinion. When you don't have any morality benchmark, any morality yardstick to define what is right and wrong, then how you would say who is right and who is wrong? Without any morality yardstick, then you will become an algorithm. I don't use the word. You're going to become, algorithmic masculinity will going to come in play. Whatever people like, whatever people feel good, I'm going to make a video about that. Or even same for feminism. So feeling in Islam can be praiseworthy or blameworthy. And how do we check this? Through both of this, reason and revelation. Is that clear? Is arrogance a bad feeling, blameworthy feeling, or praiseworthy feeling? As a postmodernist, you cannot say this. Because have you seen some cricketers? I was looking, I think 10, 15 years ago, when Virat Kohli was playing in Australia, and he hit a 6 to Michael Johnson, or Mitchell Johnson, or Michael or Mitchell? Mitchell Johnson. So the commentator says, such an arrogant style of batting. Australian accent. So, okay. But I thought arrogance is a blameworthy trait. But they are actually promoting. Obviously, they don't even know what spiritual diseases are and all those things. But when you don't have any standards of right and wrong, you will end up mashing all of these together. In Islam, we have the science of tazkiyah, which says these are praiseworthy, these are blameworthy, we should encourage this, we should discourage this. But once you remove the entire thing away, then everything is subjective. Now you tell me, my brothers and sisters. Sisters, if you have mic or paper, then please give me feedback. Is postmodernity a useful concept for Muslims or not? What do you think? After this introduction.
Sorry, who said this? Okay. So, in certain extent, yes, you are right. It cannot be. But in certain extent, it can be used. Postmodernity, now listen to this. I'm going a different route. You might not have heard this before. And you might make a video on Facebook and YouTube, massive expose, it's fine. But listen to this. We can use postmodernity because it's a deconstruction tool, drill machine. Drill machine अपने हाथ में मारेंगे तो चोट लगेगी. But if you use to deconstruct or take out the nail, then it's a useful tool. Postmodernity is a great tool for deconstructing modernity. आपको तो modernity का भी challenge है ना. सारे isms को रद्द करने के लिए आप postmodern route ले सकते हैं. लेकिन the limitation of postmodernity is आप deconstruct करें, लेकिन वो कभी construction नहीं कर सकता. Construction के लिए आपको ये arguments लाने पड़ेंगे. Is that clear? तो फेमिनिज्म पे आप तनकीद कर रहे हैं, रेड पिल मूवमेंट पे यू आर क्रिटिसाइजिंग. If you are criticizing only without saying what should be the solution, then you are basically taking the postmodern route. You're responding to one jahiliyyah with other jahiliyyah, one philosophy with other philosophy. You will say Islam gave rights to the woman. Okay, tell me how. Oh, I don't know that. But Islam gave rights to the woman. That's a postmodern. The modern argument will be we're going to work on the construction also. Is that clear? After saying, okay, this is a problem with freedom argument, choice argument, agency. So, one trend I have seen on the YouTubers, Muslim influencer YouTubers, is that most of them, when they respond to isms, they take postmodern route. They don't even know. They are responding to one philosophy by other philosophy without giving a construction. Most of the Muslim influencers who are responding to liberalism, they are using conservative arguments. Jordan Peterson, in one of the Western influencer group, I was there, WhatsApp group, one of the guys said that Jordan Peterson can be next Imam Ghazali of the Ummah. And this is coming from someone who is knowledgeable. Maybe he was very ambitious, let's put it that way. So we have to understand the limitations of postmodernity before we can use it. If you will ask me in one line, what's the difference? One line difference will be modernity gave us a challenge of identity. Because we were identified Muslim or Christian, now we are identified first as Pakistani and American because the power was taken from religion and gave it to the state. So who am I? This question was answered by modernity. That you are not identified by religion, you are identified by different things, state or ethnicity or language. But if modernity gave us a challenge of identity, post-modernity gave us a challenge of definition. That's it. कोई भी चीज को define किया ही नहीं जा सकता. Post-modernity is that. How do you define liberalism? ABC. No. This is not my liberalism. According to me, liberalism is XYZ. That's postmodernism. And that is why there is no one definition of postmodernism, because the moment you will define that, it's not postmodernity. So it's a very weird concept, because at the end of the day, it goes back to your feeling. How do you want to do something? Is that clear or too difficult of a concept? तो जब भी आप किसी से बात करें, तो आप सबसे पहले पहचानें कि इसका कोई मोरल एपिस्टेमोलॉजी है या नहीं. एपिस्टेमोलॉजी समझते हैं? कहाँ से इसको नॉलेज ले रहा है, कहाँ से मोरालिटी और मोरल एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं. If they are not considering any moral yardstick, how can you debate such a person? He's already a lost path. Then you have to use some postmodern techniques to basically refute him. But it is very important for you to identify where the other person is coming from. Maybe the other person is coming from modernity background and you are using postmodernity argument, then it's good for deconstruction. Is that clear? मैंने 5-6 घंटे की डिस्कशन को 1 घंटे या 30 मिनट्स में समराइज किया है. First of all, what we are doing, it's a very useless thing right now. I wrote a book and that's a useless book on postmodernity. And the fact I'm saying is because West have not done this after thoughtful process and research. West have lived their life, and what we are doing after 200 years, after 100 years, we are analyzing it. And while we are analyzing, West is coming up with something new. So after 50 years, we will analyze it. This is already a defensive strategy. So that's why I'm saying this is, in an essence, is a postmodern strategy. What we need to do, we need to even construct so that we can come on the driving seat.
And what it means that we have to do something which West will consider radical, which means we have to grip tight the pen from one hand and do something with the other hand so that we can be on the driving seat again. But until that, West will declare things, ideas, and we just have to basically play like someone is bowling you bouncer. You have to duck it because you cannot hit a 6 right now because you don't have any arsenal left. So yeah, this is basically a defensive strategy. Any other question before we will take a break, inshallah? No question? Was it difficult? Thoda sa to tha yaar. Slightly? Okay. Whatever concepts were difficult, it's very difficult to understand. Even if you were going to expose yourself to postmodernists, people have different flavors of postmodernity. Some people don't even agree that there is a concept like postmodernity. Some people have different names of postmodernity. So it's not a philosophy, it's just the idea. It's a new, you can say, a layer coming. So however you define, but this was the summary of how you explain the things. That when you don't have moral standards left, whether of revelation and reason, then you will define things with your reason and you will try to be more argumentative. Whataboutism is going to come under postmodernity. So all these things. I hope I was going to control my language a little bit. So I'll use less philosophical language once we'll come back from break. So okay, we have few options left. We have either we can go to LGBTQ and understand that because it's connected to postmodernity, or we can discuss gender roles and feminism and gender wars once we'll come back. Gender wars include both toxic femininity and toxic, mashallah. When British colonialism started, all their germs and bacteria came wherever they colonized the world. So obviously it's a reality, undeniable fact that this region was also colonized where we were sitting. And when it was colonized, their ideas of religion versus secular was also hammered through us and our schooling system. So by the way, William Kavanagh argues in his book Myth of Religious Violence, that's why I referred his name, that the toughest task for the Brits colonialists was to install this religion mentality in two regions, in two religions. One is Islam, one is Hinduism, the other is Hinduism, because they both cannot come into the Christian category of religion, because both talks about political, social, economic mindset. But obviously it's because of colonization and it's because of our weak mentality that we got freedom from the regional perspective, but mentally we are still dependent on the political systems of the West, economic system of the West, education system of the West. And education system have to do a lot with the entire mindset. There's a good book about this, Restating Orientalism, a critique to the modern education by Wael Hallaq. It's worth reading what colonialism did and how this entire mindset was spread throughout the world. Okay, let's start. So I only have 25 minutes and then we'll open up Q&A. I'm writing something on this. My one book about sexuality and LGBTQ is already published 2 years ago. I should have brought this book. But now other book I'm writing these days, I hope it will be published within few months, is on divine gender solidarity versus man-made gender wars. First 3 chapters are on feminism, so I will get cancelled by the sisters. And the next 3 chapters are on toxic masculinity, so I'll be cancelled by you all. So to summarize that entire 240-page book in 25 minutes, I won't be able to do justice with that. और मैं उर्दू में बात करूँगा, कि मुझे किसी ने रिमाइंड कराया कि उर्दू में भी बात करें आप. Once I was in New Jersey giving khutbah, and after the khutbah, you know, khutbahs Urdu, English में होते हैं वहाँ पे. After the khutbah, a guy, maybe recent immigrant from Lahore, he said, Sheikh, do you speak Urdu? So I said, मेरे कलाम में जो तख़य्युल की नज़ाकत है, तसव्वुर की तहारत है, बयान की बलागत है, ज़बान की फसाहत है, वो किसी और खतीब के यहाँ नहीं मिलेगी आपको. Then he told, actually English is better than. Okay. Sisters कैसे रिस्पॉन्स देगी अगर मैं कोई सवाल पूछूंगा? लिख कर दे सकती हैं, कैसे देंगी? अच्छा, सिस्टर्स प्लीज़ ये मुझे रिस्पॉन्स चाहिए. मैं ब्रदर्स से पहले पूछ रहा हूँ, फिर आपका भी रिस्पॉन्स चाहिए. आप प्लीज़ हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक एटमॉस्फेयर रूम में चेक करना चाह रहा हूँ, कभी टेम्परेचर कहाँ है रूम का. अच्छा, बैड पेरेंटिंग का प्राइम रिस्पॉन्सिबल, मुझे एक जवाब चाहिए, दो नहीं. प्राइम रिस्पॉन्सिबल कौन है इन दोनों में से? वर्किंग वुमेन या एब्सेंट फादर?
हाथ खड़ा करके बताएं, कम ऑन। बैड पेरेंटिंग का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल एब्सेंट फादर या वर्किंग मदर? हाँ, पोस्ट मॉडर्न बना रहा हूँ मैं आप लोगों को अब सारे। बताएं बताएं। एब्सेंट फादर, इसमें आपका गिल्ट कॉन्शियस कितना है कि आप मेल है तो आपको अपोलोजाइज करना है? विक्टिम मेंटालिटी नहीं। अच्छा, सिस्टर्स आप भी इस पे जवाब दें। आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ पेपर प्लेन थ्रो इट, आई डोंट नो। आप किसी ने हाथ उठाया था पीछे? एब्सेंट फादर। अच्छा, ये केस टू केस डिपेंड करता है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को छोड़ के वापस चले गए थे? हाजर ने बड़ा किया, क्या जबरदस्त बड़ा किया। और वो वर्किंग वूमेन भी थी, वर्क कर रही थी रिस्क के तलाश में, सफा से मरवा। सही करते हैं ना, सही क्या है, मेहनत का काम है ना। एब्सेंट फादर भी था, वर्किंग वूमेन भी थी, फिर भी इस्माइल जैसा बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एंड्रयू टेट या सिमोन डी बोआर, ये समझ रहे सी, ये तो शोहदा फेमिनिस्ट की है। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की लीड फेमिनिस्ट थॉट की प्रमोशन कर रहे हैं सिमोन डी बोआर। अगर आप इस एंगल पे सोच रहे हैं तो आप एक को ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, दूसरे जेंडर को ब्लेम करेंगे। हम जेंडर सेंटर्ड हो ही नहीं रहे, वी आर अल्लाह सेंटर्ड। हो सकता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ माँ ने बड़े किए और बड़े जबरदस्त निकले, कितने ऐसे बच्चे दोनों ने बड़े किए लेकिन अच्छे नहीं निकले, कितने अच्छे बच्चे जो बाप की तरबियत कैसे अच्छे हुए हैं। सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्या फीमेल कंपेनियंस ने कभी कभी बाहर जाके काम किया है? द आंसर इज यस। क्या मेल कंपेनियंस कभी कभी एब्सेंट रह रहे थे जिहाद या इस और वजहों से? एब्सोल्युटली। लेकिन हमारे माइंडसेट में हम वेस्टर्न तरीकों से ही जवाब देखते हैं, हम अपने ट्रेडिशन को देखते नहीं है। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूं, ये उसूली प्रिंसिपल एतबार से याद रखिएगा। इस्लाम डजंट बिलीव इन जेंडर एंटागोनिज्म। इस्लाम डजंट बिलीव इन जेंडर एंटागोनिज्म, यानी जेंडर्स के दरमियान फड्डा चल रहा है, वॉर हो रही है, सारे मैन गार्बेज हैं, सारी वुमेन लाइक अ नैपकिन है वगैरह। ये सब इस्लाम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। आई थिंक आई हैव अ राइट, आई एम राइट? ओके। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सूरह तौबा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलिया मिन बअद, के बिलीविंग मैन एंड बिलीविंग वुमेन आर औलिया ऑफ ईच अदर। औलिया का ट्रांसलेशन क्या होगा, तर्जुमा? फ्रेंड्स, प्रोटेक्टिव फ्रेंड्स, एलाई, सपोर्टर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन मौलवी साहब तो कहते हैं मर्द औरत दोस्त नहीं हो सकते। अब तर्जुमे में प्रॉब्लम आ गई है ना, तो फ्रेंड्स ना कीजिएगा फिर, वरना फिर आपका अब्दुल्ला जो सीबीएम में जाएगा वो क्या करके आएगा आपको सब पता है। वो कुरान की बात मान रहा हूँ मैं। ओके ओके, वापस आते हैं। इसका इमाम कुर्तुबी ने, एक बहुत ज़बरदस्त मुफस्सिर थे अंदलुस एरिया के, उन्होंने क्या तफसीर किया औलिया किस मानों में? एक दूसरे को दिली एतबार से मोहब्बत और प्रोटेक्शन करने के एतबार से। यानी अगर मैं मुसलमान मर्द और औरतों को देखूंगा तो मुझे लगेगा यार ये मेरी उम्मत का हिस्सा है, दे आर फ्रॉम मी, आई एम फ्रॉम देम। और ये खासकर आपको तब महसूस होगा जब आप किसी वेस्टर्न में माइनॉरिटी के हैसियत से रहेंगे। जब वॉलमार्ट में चलते हुए आपने एक निकाबी हिजाबी खातून का मुस्लिम वुमेन को देखा एज ए मैन, आप कहेंगे यस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन, एंड वाइस वर्सा। ये सोच, ये देखा आप लोग एक उम्मा का हिस्सा है। तो आप लोगों के अंदर अगर जेंडर वॉर्स या जेंडर एंटागोनिज्म, कोई बाहर के बैगेज, ये वेस्टर्न बैगेज आ गया है और आप इसी एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप पेंडुलम की तरह स्विंग होंगे। और फिर नतीजा क्या निकलेगा? 100 years ago, women in America did not have a right to vote. Now they don't even know what is a woman. Because क्या पेंडुलम स्विंग हुआ है? Because they are not seeing thing from divine light. अंधेरे में पेंडुलम की तरह घूमे जा रहे हैं। Is that clear? तो इस्लाम इस प्रेमिस को ही नहीं मानता कि we have to respond to feminism या we have to respond to tateism या निक फ्यूंटिज्म या जो भी आप इज्म लाना चाहे। इस्लाम ने हमें गाइडलाइन दी है, उस पर बात करते हैं। अच्छा, आज मैं क्योंकि छोटा सा टाइम रह गया है, फेमिनिज्म की हिस्ट्री पे नहीं जा रहा, कितनी वेव्स थी, कैसे स्टार्ट हुआ, वो इतने बुरे, हम इतने, वो उस पे मैं नहीं जा रहा। मैं आपसे बस डिस्कस करूंगा ये अकायद, जिसको अजम्पशंस ऑफ फेमिनिस्ट थॉट कहते हैं। इसमें कुछ रेड पिल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की भी है, लेकिन एक ओवरऑल हिस्ट्री का मैं आपको बताता हूँ कैसे ये हुआ। वेस्ट के अंदर चर्च और स्टेट दोनों में प्रॉब्लम चल रहे थे, अभी हमने डिस्कस किया ना।
ख़वातीन पैसे जा रही थी, ख़वातीन बाइबल का नुस्खा अपने पास नहीं रख सकती थी 16-17 सेंचुरी में. By the way, give me a name of Western university which is popular. The most famous Western university now. Harvard. When was the first woman admitted in Harvard University? Harvard was a male-only college. Do you know this? ये हमें सिखाएंगे इस्लाम ख़वातीन के हुकूक. 1946 से पहले वुमेन हार्वर्ड नहीं जा सकती थी. Do you know this? कोलंबिया का नाम सुना? कोलंबिया. 1982 से पहले वुमेन वहां नहीं जा सकती थी. जस्ट गूगल राइट नाउ. 1982 से पहले वुमेन नहीं जा सकती थी. येल यूनिवर्सिटी 1969 से पहले वुमेन नहीं जा सकती थी. और अब obviously I'm not doing comparative analysis. These are the people who, and now there are more women getting education than men. More women have degrees. There is a gender studies department led by the woman, and now you have masculinity crisis in the West. क्यों pendulum swing हो रहा है. Are you getting something? Okay, अभी शुरू कहाँ से हुआ? इसकी क्रिश्चियन राउट भी है, इसकी क्रिश्चियन थॉट भी है, इसको स्टेट ने भी यूज किया है. 17-18 सेंचुरी में यूरोप में एक मूवमेंट चली थी, विच हंट मूवमेंट. गूगल कीजिएगा, विच हंट मूवमेंट, जिसमें ऑलमोस्ट इफ कंजर्वेटिव नंबर्स आर 80,000 वुमेन को यूरोप में जला दिया था. विचेस कह के. विचेस का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? चुड़ैल कहकर. मेरा एक्सेंट सही है, तजवीज से ही निकलिए ना. चारू नहीं. अच्छा, मोस्ट ऑफ देम वर वुमेन, सम मेन बट मोस्ट ऑफ देम वर वुमेन के. और उसको चर्च ने भी एंडोर्स किया था. अब जब ऐसी एक कराची में अगर 80,000 वुमेन को एक रिलीजन और स्टेट दोनों सपोर्ट वुमेन के खिलाफ होगा, वुमेन को इतना दबाएंगे तो निकलेंगे या नहीं रिबेलियस. फिर उनको वोट का राइट नहीं, उनको तलाक लेने का राइट नहीं है, उनको लीगल एंटिटी नहीं मानना. ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है. आप जस्ट गूगल करेंगे या मेरी बुक लीजिएगा तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगी आपको. 1920 में पहली फेमिनिस्ट की वेव कामयाब होती है कि औरतों को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं. 1960 में दूसरी वेव कामयाब होती है, जो दूसरी वेव का ये बना हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं होना मैं इसमें जाता. तीसरी वेव और चौथी वेव पे इख्तलाफ है कि वो हैं क्या, डिवीजन है. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वुमेन आज़ाद होती जा रही है वेस्ट में. अब जब वुमेन आज़ाद हुई है, वो इतनी आज़ाद हो गई है कि अब दूसरी तरफ क्राइसिस आने शुरू हो गए. अब ये हालत है. अब मैं आपको ज़रा सिचुएशन बताता हूँ कि 2021 के मुताबिक CDC एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज अमेरिका का इंस्टीट्यूशन है, उसके मुताबिक CDC गॉव वेबसाइट के मुताबिक 20% of the female commit suicide and 80% of the male are committing suicide. So if male are having the privilege, why they are ending their life? Mental health के issues मेल में ज़्यादा हैं, ड्रग्स के इशू मेल में ज़्यादा हैं, होमलेसनेस के इशू मेल्स में ज़्यादा हैं. Are you getting it? तो सुइसाइड कर रहे हैं, लाइफ खत्म कर रहे हैं, डिग्रीज वुमेन के पास ज़्यादा हैं. And just 50 years back, there were no women allowed in your country. So it's pendulum is swinging. अब इसके दो नतीजे रह जाते हैं. या तो मैं फेमिनाइज मैस्कुलिनिटी आ जाए मेरे अंदर कि मैं एक्सेप्ट कर लूं, या तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ जाए और मैं फिर वायलेंट हो जाऊं. क्योंकि प्रॉफिटिक मैस्कुलिनिटी तो हमने हटा दिया, रिलीजन को तो हटा दिया, रिलीजन का तो दरवाजा बंद कर दिया. समझ में आ रही है बात? So that's why gender wars is causing and popping up with different names altogether. Maybe it will, right now it's Andrew Tate and Nick Fuentes. 10 years ago it was someone else. 10 years back, 10 years forward it will be someone else. The names are changing, but the mindset, it's like swinging like pendulum. किसको ज़्यादा हुकूक मिलेंगे? और extremism thrive करता है ऐसी चीज़ों में जब ये emotional arguments बहुत होते हैं. अच्छा, अब आते हैं अकीदे पर और फिर हम ख़त्म करते हैं. Instead of saying feminism is bad and toxic masculinity is bad वगैरह वगैरह, let's discuss the root cause of this. Once we understand this, hopefully we can understand where they are coming from. We don't say that feminism is all bad, because for that we need a Shari'i evidence, because it's really hard to define feminism. I'm not a postmodernist, but even feminist scholars said that it is almost impossible to come up with a definition of feminism where all feminists will agree. Same thing goes with liberalism. But let's go with one by one.
with what it is. The first feminist aqidah, where all the feminists, even though they are by the way, feminists have many different division and kinds. There's liberal feminists, there's radical feminists, there's postmodern feminists, there's lesbian feminists. Lesbian feminists say we don't need men because we hate men, we're going to marry each other. Radical feminists say, no, we won't marry because we hate men. Liberal feminists say, no, we will marry as long as we have a choice. So they have a disagreement. But all of them, we're going to give importance to this argument. This is agency and choice argument. So this says, so now we are not targeting the waves, we are trying to understand common assumption which all waves of feminism have, okay? Choice and agency. This says कि अगर वुमेन को कोई बाहर से चीज बता रहा है, चाहे ट्रेडिशन, रिलीजन, गॉड, प्रॉफिट, सहाबा, उसका शौहर, उसके घर वाले, जो उसे खुद नहीं करना है, तो वो टॉक्सिक है, क्योंकि उसकी एजेंसी छीन ली गई है, उसकी चॉइस छीन ली गई है. समझ में आ रही है? तो इनका नारा है माय हिजाब, माय चॉइस. आप किसी फेमिनिस्ट से पूछेंगे ना, क्या ये आपसे एग्री करते हैं? They will give you different perspective. And I have done research on this, that's why I'm saying there are academic feminists who will disagree with this. Some will say, my hijab, my choice is right. As long as you have a choice, you can feel free to take a hijab. Some other feminists, by the way, the irony of this, there is a Fadila Ammara, Algerian feminist, who disagreed with Kristen Delphi. Kristen Delphi is a non-Muslim feminist who says, if Muslim women want to exercise their choice और हिजाब लेती हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, वो अपनी चॉइस पे बस अमल करें. फादिला हमारा अल्जीरियन फेमिनिस्ट है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये ऑपरेशन का जरिया हिजाब को निकालो. इवन चॉइस आर्ग्यूमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि वुमेन ना ही वो से पता नहीं है हिजाब के जरिए ऑपरेशन की सिंबल हो रही है. वेट अ मिनट, हम किस फेमिनिस्ट की बात माने? समझ में आ रहा है? कुरान में तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, यहूदियों के लिए कहा था कि इनके दिल एक जैसे नजर आते हैं लेकिन अलग अलग हैं. ये किसी भी मूवमेंट के लिए है. बहरहाल एजेंसी चॉइस, एजेंसी चॉइस. तो ये अच्छा, क्या औरत पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री में काम कर सकती है या नहीं अपनी चॉइस से? आप कह रहे हैं जो भी चॉइस होगी उसको करने दें. फेमिनिस्ट का एक ग्रुप है जिसको सेक्स पॉजिटिव फेमिनिस्ट कहते हैं एकेडमिक में. वो कहते हैं एज लॉन्ग एज शी इज मेकिंग हर ओन चॉइस, वो काम कर सकती है, आपको क्या लेना देना है, उसकी बॉडी उसकी चॉइस. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहेगा नहीं, उसकी चॉइस से मर्दों को फायदा हो रहा है, ये तो गलत बात है. I'm not joking. I've given references to all these. Did you see the conflicts? Again, once you remove the fabric of revelation, who is going to decide? You have removed the gauge of gauging true and falsehood. What is true and what is false? Subhanallah. So agency and choice का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. अच्छा, एक इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. सिस्टर्स प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, और आप लोग भी जो फादर बनने वाले हैं इंशाल्लाह. क्या मैं अपने 14 साल के बेटे या बेटी को फजर की नमाज के लिए उठा सकता हूं, या अपनी 14 साल की बेटी को हिजाब के लिए कह सकता हूं तुम्हें हिजाब पहनना है लाजमी, हिजाब के बगैर बाहर नहीं जा सकती, और वो कहे मुझे नहीं उठना फजर की नमाज में, या वो कहे मुझे नहीं पहनना हिजाब, तो क्या मैं डिसिप्लिन कर सकता हूं उन्हें कि वो लाजमी करना है? बताएं क्या आपकी ओपिनियन है इस पे? As a Muslim, I think I will get the answer. No, you can actually exercise your discipline because you are a father or you are a mother, sister. You can convince and you can actually use this discipline to make sure that they pray Fajr or she covers herself. Agency or choice का argument जो feminists use करते हैं उसमें यह है कि if you are going to say to your 14-15-year-old कि फजर की नमाज पढ़नी है, उसको नहीं पढ़नी और आप उसके कह रहे हैं, तो you are a toxic father because you are going against her choice. You're going against his agency. समझ आ रही है बात? अच्छा, इस्लाम ने इस बात की तो वैल्यू दी है कि आप अगर कोई काम शौक से करेंगे तो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, लेकिन इस्लाम ने इस बात से मना नहीं किया है. ये लिबरल अजम्पशन है. अक्सर मुहज्जिबा खातून में ये बहुत ज़्यादा होता है. डिस्कशन मेरी कजन्स में भी जो लिबरल घराने से उनमें बहुत हो रहा था कि नहीं वो खुद कर लेगी जब दिल चाहेगा, क्योंकि एजेंसी का आर्ग्यूमेंट कहता है कोई बाहर से मुझे फोर्स ना, रेस्ट्रेन ना लगाए. हम ये कहते हैं कि हो सकता है हम उसको कहें कि तुम्हें करना है लाजमी, और फिर उसका दिल माइल हो जाए आहिस्ता आहिस्ता. हो सकता है कि हम उसे कहें नहीं तुम्हें पढ़नी है फजर की नमाज, उठो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा 5 वक्त का नमाजी बन जाए. ये क्यों सोच रहे हैं? बाहर से जो एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट आएगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, वो हमेशा गलत ही होगा.
ये लिबरल अजम्पशन है, ये फेमिनिस्ट की अजम्पशन है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसमें भी इनकंसिस्टेंसी है इस चॉइस और एजेंसी के आर्ग्यूमेंट में। ये कहते कोई हम पे बाहर से फोर्स ना करे, लेकिन स्टेट फोर्स करेगा आप पे। क्या आप बगैर किसी कपड़े के डाउनटाउन या सदर में घूम सकेंगे? यहाँ पे सदर तो बहुत दूर हो गया, अभी हम कहाँ डिफेंस में, पता नहीं डिफेंस में शायद घूम भी सकें, मैं तो सदर चले आता है सदर में आप घूम सकेंगे इस तरह कुछ, क्योंकि स्टेट की एक गाइडलाइंस है। अच्छा एक बात बताएं, माय हिजाब माय चॉइस कहते हैं ना, आप लोग टैक्स नहीं देंगे पाकिस्तान में, गवर्नमेंट आप पे केस कर सकती है। उनको कहते रहे माय मनी माय चॉइस, वो नहीं सुनेंगे। यू डोंट हैव चॉइस, यू हैव टू गिव टैक्सेस। But this argument only apply in religion, not in state. Did you see hypocrisy? Now you'll understand the first session. Power has been taken from religion and given to the, तो रिलीजन मिथिकल रह गया। अभी स्टोरियां सुनाओ, बेड टाइम स्टोरी सूरह यूसुफ की, कभी अप्लाई नहीं करना वो, बस दूर रहना। समझ में आगे बात? बहरहाल इस पर तफसील से बात हो सकती है, लेकिन अल्लाह अकबर, ये तो लगता है क़यामत करीब आ रही है। वो हदीस है ना कि पूरा दिन घंटे की तरह गुजर जाएगा। अच्छा, these are the I want to have a Q&A. Sisters, please ask me a question and please feel free to contest me inshallah. दूसरा इक्वालिटी का एक बुत बना के बैठे हुए हम लोग माइंड में, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके आइडल को ब्रेक किए बगैर काम नहीं चलेगा। आज हम तोड़ के जाएंगे उस आइडल को। इक्वालिटी से मुराद क्या है? सबसे पहले तो ये भी अनडिफाइंड है। अगर वुमेन और मैन बराबर हैं क्रिएशन के एतबार से, सबसे पहले तो हम ये एक डिस्क्लेमर रख दें, क्या इक्वालिटी इज अ गुड थिंग? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज इट्स अ वेग क्वेश्चन, बिकॉज इफ आई एम सेइंग इज इक्वालिटी अ गुड थिंग between Netanyahu and that child in Palestine who got killed, you would say absolutely not. So you need more information. Okay, is equality a good thing between two unequal things? You will say no. That equality will be zulm. समझ रहे हैं आप नाइविटी आपकी कैसी एक्सप्लॉइट होती है? हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं, हबीबी इक्वालिटी इन whom? Because Allah says, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Allah कह रहा है मुस्लिम और मुजरिम, the Muslims and believers and the criminals, you are equating them. What's wrong with you? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. How do you judge? अल्लाह ताला ऐसा कह रहा है, क्या तुम किस तरह की बातें कर रहे हो कि मुजरिम और मुसलमान एक जैसे? ओके, अब आते हैं तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब यह है कि ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आगे जा रहा है। तो फेमिनिस्ट की अजम्पशन ये है कि हम पे जुल्म इसलिए हो रहा है। अच्छा, फेमिनिस्ट कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, सही है। हम भी ये कहते हैं कि वुमेन पे जुल्म हो रहा है। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, 7th सेंचुरी अरेबिया में भी जुल्म हो रहा था। लेकिन हमारा सोल्यूशन फेमिनिज्म से रेडिकली डिफरेंट है। वो ये फेमिनिज्म ये कहते हैं ये सोल्यूशन इसलिए औरतों पे जुल्म हो रहा है कि मर्द ज़्यादा ऊपर है, औरतें ज़्यादा नीचे, और इक्वालिटी करनी पड़ेगी। तो इक्वालिटी कैसे होगी? इसको लाएंगे ऊपर और फिर इसको नीचे लाना है। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होती है इक्वालिटी जो फेमिनिज्म यूज करता है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये भी है। समझ में आ रहा है? और ये बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि फिर ये यूं हो जाता है और फिर मेंटल हेल्थ के केसेस भी आने शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अच्छा, तब होता क्या है? आपने सोचा इक्वालिटी इज अ गुड थिंग, तो अब इसको डिफाइन कैसे करें? डिफाइन इस्लामिक में रैशनलाइज कैसे करें? इस्लामिक में कहेंगे एज अ क्रिएशन मैन एंड वुमेन आर इक्वल, वी बोथ आर क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देयर इज नो डिफरेंस in terms of morality, in terms of moral teachings, in terms of our judgment, whether punishment or reward, we are equal, right? But in terms of our role here, is it equality or complementary? Sometime equality, sometime complementary. We both have to pray 5 times a day. It's a role we have to do. We both have to be nice to each other. We both have to be nice to our parents. We both have to respect each other, husband and wife. We both have to fulfill the conjugal rights of each other. But लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसमें complementary हैं, equality नहीं है। औरतों को ज्यादा कवर करना है, मर्दों को कम कवर करना है। औरतों को कुछ दिन नमाज नहीं पढ़नी है,
मर्दों को पढ़नी है, क्योंकि इन अवर एपिस्टेमोलॉजी मैन डोंट मेंस्ट्रुएट. पोस्ट मॉडर्न में मैन मेंस्ट्रुएट, आई डोंट नो हाउ, राइट? ओके, तो इसी तरह औरतों पे गोल्ड हराम नहीं है, मर्दों पे हराम है. औरतों को मर्दों को सपोर्ट नहीं करना है शादी के बाद, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. यहां कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है. अब कोई अगर एक, मुझे याद, एक नॉन मुस्लिम खातून ने आके मुझसे सवाल पूछा था 2 साल 3 साल पहले कि why women have to pray at the back and men have to pray in front, where is equality? I said because we don't believe in one. So what do you mean? So I said because in Islam rules are not made based on equality, because equality is not a virtue. We believe in divine guidance, and if he decides something, we'll go for it. Here, in terms of praying at the back, Islam prioritizes modesty more than equality. Because here modesty is a virtue. But for you, maybe equality is a virtue. For us, that's not the case. तो इक्वालिटी के बुत को तोड़े. अगर इक्वालिटी को बेंचमार्क बना लिया है तो फिर तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे सारे, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे. शरीयत को आप पूरा जेपरडाइज कर देंगे. माँ के 3 हुकूक क्यों है, बाप का क्यों नहीं है, वो कभी सवाल नहीं आता, लेकिन आएगा जब एंड्रू टेट जैसे लोग आएंगे. तो आप कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच रखें. तभी मैं कहता हूं कि कभी एक्सप्लेन करना हो तो इस्लाम को ऐसे नहीं करें, इस्लाम इज ऑल अबाउट इक्वालिटी. ये वेग स्टेटमेंट्स ना दें. खुद जुम्मे के स्पीचेस में जो दिए जाते हैं ना, ये से इस्लाम doesn't believe in egalitarian approach all the time. Islam believe in complementarian approach. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पूरी करनी है, इनके अंदर सब कमी हो जाएगी और इवेंचुअली ये मामला होगा. तो इक्वालिटी का बुत तोड़ना ज़रूरी है. इज दैट क्लियर? वन ऑफ माई टीचर यूज्ड टू गिव एग्जाम्पल about why women have to cover more and men have some other restrictions. Because Allah subhanahu wa ta'ala के 2 attributes हैं, अगर उन्हें summarize करें तो 2 attributes बड़े खूबसूरत बनते हैं. वो क्या attributes हैं? जमाल and जलाल. जमाल and जमाल means beauty, जलाल means might. अल्लाह ताला ने अपने इन एट्रीब्यूट की ज़्यादा रिफ्लेक्शन, जमाल की ज़्यादा रिफ्लेक्शन मैन में रखी है, वुमन में रखी है. दोनों को बनाया खूबसूरत, लेकिन ज़्यादा रिफ्लेक्शन वुमन में ज़्यादा है. जलाल की ज़्यादा रिफ्लेक्शन किस में रखी है? तो ज़्यादा जिस जेंडर को दिया है उसी को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दिए ताकि उसे अब्यूज़ ना करे, और जलाल जिस जेंडर को दिया है उसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दिए ताकि उसे अब्यूज़ ना करे. अगर आपने इक्वालिटी के बुत को मान लिया है तो फिर ऐसी क्लासिफिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है. यू हैव योर ओन. Inshallah, I will answer this once we're going to finish. Inshallah, that's a very important question. Inshallah. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो मुस्लिम फेमिनिस्ट होती क्यों है ये बताएं. जो मुस्लिम फेमिनिस्ट है, जिसको आप मीडिया पर देखते हैं, या अपनी फैमिली में एक आंटी है जो हमेशा मर्दों से नफरत करती है, या एंड्रू टेट है जो दूसरी तरफ हो गया टॉक्सिक में, ये होता क्यों है? क्या इसलिए होता है कि वो आंटी जो बेचारी इंग्लिश सही तरह नहीं पढ़ सकती, वो पूरी फिलॉसफी फेमिनिज्म की पढ़ के आ गई है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. Actually, vast majority of the Muslim women doesn't even know who Simone de Beauvoir and all these feminist scholarship. वो देखती हैं कि यार मेरी खाला पे जुल्म हुआ है, मेरी वालदा डोमेस्टिक वायलेंस से मुतासर है, मेरे भाई को हर चीज़ मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी, मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया, मुझे मेरा इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं मिला, और मेरा भाई हज करने जा रहा है लेकिन मुझे इनहेरिटेंस का हिस्सा नहीं दे रहा. फिर जब वो मुस्लिम कम्युनिटी में आती है तो कोई इसके अकाउंटेबिलिटी मर्द की नहीं करता, और फेमिनिज्म उसे अट्रैक्शन लगती है, फेमिनिज्म ऑपरेशन पे आवाज़ उठा रही होती है. तो हम खुद अपनी ख़वातीन को पुश करते हैं फेमिनिस्ट होने के लिए, और जब वो फेमिनिस्ट हो जाती है कहते हैं देखें कैसी हो गई है. आपको बनना था मर्द, अब मर्द पे आ जाते मर्दानगी पर. आपको वो मर्द होना था कि साहबियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जाती हैं, अबू दाऊद की हदीस है, और कहती है कि हमारे हस्बैंड हमें मारते हैं, तो रसूलुल्लाह कहते हैं लईसा भी खियारिहिम, कि वो मर्द अच्छे नहीं हैं जो आपको मार रहे हैं. ये है मर्दानगी, कि आप अपने जेंडर वाले की अकाउंटेबिलिटी करें, कि इंसाफ नाफिज करना है आपको. अभी तो दोस्तियां यार जलती हैं ना, नहीं यार अपने वाले के खिलाफ कैसे बात करते, तेरा भाई भी तो फंसेगा एक दिन. अच्छा, ये जरा ज़्यादा समझ में आती है आप लोगों को, तो पहले यार मुझे बताते आप लोग. अच्छा, ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें ना हो, ना खुद आपकी सिस्टर्स को फेमिनिस्ट बनाएंगे, खुद आपके ब्रदर्स को टॉक्सिक मैस्कुलिनिस्ट बनाएंगे. समझ में आगे बात? तो इंसाफ के लिए खड़े हों, ये बहुत 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 ज़रूरी है. अच्छा, इक्वालिटी से नीचे आ जाते हैं. फ्रीडम, ऑटोनॉमी, इसको छोड़ देते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है. हायरार्की
क्विकली बिकॉज आई एम जस्ट रैपिंग इट अप, हायरार्की जब फेमिनिस्ट को ये महसूस होता है, फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप को, कि वुमेन आर बीइंग ऑप्रेस्ड, तो उनका सोल्यूशन ये होता है जो इस्लाम से डिफरेंट है कि सोल्यूशन लाइज इन हायरार्की, प्रॉब्लम लाइज इन हायरार्की। मर्द को ऊपर इस्लाम ने बनाया है, लीडर बनाया है, क़वाम बनाया है, वो उससे छीन लो ताकि हायरार्की, वुमेन में मोर पावर आ जाएगी। ये सोल्यूशन इस्लाम से रेडिकली डिफरेंट है। हम भी ऑपरेशन को मानते हैं वुमेन के, लेकिन हम कहते हैं हायरार्की रहनी चाहिए, वरना एनार्की हो जाएगी, हायरार्की नहीं होगी तो। समझ में आ गई बात? और हायरार्की होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कहीं अब्यूज़ का केस होता है तो हायरार्की को तोड़ता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी करता है, नेक्स्ट बंदा रिप्लेस करता है। सही है? अगर सीईओ ने कोई स्कैंडल किया है किसी कॉन्सर्ट के अंदर, एस्ट्रोनॉमर के बारे में नहीं बात कर रहा मैं आपसे, तो आप पूरी कंपनी को जेपरडाइज नहीं कर देंगे, हायरार्की को, सीईओ को रिप्लेस करेंगे। सही है? अच्छा, आपके सामने पता नहीं क्यों आने लगे थे वो सॉन्ग्स। अच्छा, तो हायरार्की को तोड़ना नहीं है, बल्कि जो मर्द ऑपरेशन कर रहा है उसे अकाउंटेबल ठहराना है। लेकिन अगर हायरार्की को तोड़ दिया तो एनार्की फैलेगी सिर्फ। जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना है आप लोगों ने? माशाल्लाह, पाकिस्तानी ने भी सुना हुआ है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, 14 साल की बच्ची को मैं और मेरी वाइफ ये वीडियो देख रहे थे, 60 मिनट पे वीडियोस आती है, 60 मिनट यूट्यूब पे चैनल है, कि वो 14 साल की बच्चियों को प्राइवेट आइलैंड ले जाता था। हमारी बच्ची की भी उम्र 14 साल है। मैं और मेरी वाइफ देख रहे थे और मैंने सोचा यार ये 14 साल की बच्ची को ले जा रहा है, इसके फादर कहाँ थे? मेरी वाइफ ये पूछ रही है, मैं भी ये पूछ रहा हूँ। फिर मैंने मेरी वाइफ को कहा, यू नो व्हाट, इवन इफ देयर वाज वन, he would have been labeled as toxic if he would have prevented his daughter to travel, because he's going against the daughter's choice. Oh, you're not letting me fly, you're not letting me finding my true self. ये सारी चीजें होती है ना, आप मुझे इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे अब्बा। तो ये सारा फेमिनिस्ट एजेंसी और चॉइस के असम्पशन से आता है। अच्छा, हायरार्की होना लाजमी जरूरी है। अगर हायरार्की नहीं होगी तो वुमेन को कोई भी परवर्ट गाय जेफरी एप्स्टीन की तरह एक्सप्लॉइट कर सकता है। तभी इस्लाम ने विलाया का सिस्टम रखा हुआ है, औरत को एक प्रोटेक्शन दी हुई है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। अब वो अलग बात है कि हमारे यहाँ प्रोटेक्टर्स ही प्रेडेटर बन जाते हैं। मैंने खुद एक जनाजा पढ़ाया है एक खातून का अपनी मस्जिद में, जिसको उसके हस्बैंड ने कत्ल किया, प्रेग्नेंट, और लव मैरिज हुई थी। हमारे अमेरिका में लव मैरिज हुई थी और वो प्रेग्नेंट थी, कुछ झगड़ा हुआ, चोक कर दिया हस्बैंड ने। अब जब वुमेन देखेगी और देखेगी कि इमाम इसको एड्रेस भी नहीं कर रहा, इस इश्यूज़ को ला भी नहीं रहा डोमेस्टिक वायलेंस के, क्योंकि वो डर रहा है कि मेल क्राउड मेरे खिलाफ ना हो जाए, मुझे फेमिनिस्ट लेबल ना कर दे, तो वुमेन के पास क्या ऑप्शन है? या तो किसी और जगह जहाँ इस जुल्म पे आवाज़ उठ रही है फेमिनिस्ट, या तो आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि कोई और हाईजैक करके ना ले जाए आपकी बहनों को। तो मसला तो है माँ भी, मसला तो है, और ये रेट्रोस्पेक्टिव सोचा नहीं जाता। फेमिनिस्ट पे तनकीद करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में, मर्दानगी दिखाने में बड़ा मसला होता है। अच्छा, पेट्रियार्की, बहरहाल एक अलग बहस है, अब इसको ख़त्म करते हैं। इसी से फिर मैस्कुलिनिटी पे बात करनी थी, लेकिन वो अभी टाइम नहीं मिला। लेकिन इसके जवाब में मैस्कुलिनिटी निकली। मैस्कुलिनिटी इसके रेफ्यूटेशन में, रिस्पॉन्स में निकली है। उसके बहुत सारे नाम हैं, मैन गोइंग ऑन इट्स वे, सेक्सुअल ड्राइव, रेड पिल मूवमेंट, आप कुछ भी नाम ले लें, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट नाम लिए। रिएक्शनरी, मैस्कुलिन, मैन सेंटर्ड मूवमेंट्स निकली है। उनका मकसद ये है कि हम ताकत वापस लें, और सोशल मीडिया की वजह से बहुत तेज़ी से फैला है। एंड्रयू टेट आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जिसको आप लोग शेखुल इस्लाम समझते थे। और बहुत जल्दी वो एक्सपोज होते जा रहे हैं, आएंगे, ऊपर उड़ेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। वो क्या नियो लिबरलिज्म और नियो कैपिटलिज्म के भी इसमें उनसर है कि एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियली, व्यूअरशिप, सेंसेशनलिज्म। लेकिन इसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ा। अब देखें, क्या इस्लाम के अंदर वुमेन एडवोकेसी रखी है? नहीं, शरीयत ने। अगर किसी वुमेन को लग रहा है हम पे जुल्म हो रहा है, तो क्या वो एडवोकेसी के लिए, अपनी जेंडर की एडवोकेसी के लिए आवाज़ उठा सकती है? नहीं, एब्सोल्युटली। Actually, we should teach this to our sisters, that if someone is abusing you, you should definitely raise your voice. But not by challenging the entire system of Islam, rather calling out the culprit within the hermeneutical system. Because system को अपने खिलाफ कर लेना, ये मार्क्सिस्ट मेंटालिटी है। समझ में आगे बात? तो मैंने आपको कहीं मिसाल में बताई, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा आके पूछती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्यों कुरान हमेशा मर्दों का जिक्र करता है, औरतों का नहीं करता। अब आज कोई अगर सिस्टर ये सवाल करे, सबसे पहले आपके जहन में आएगा हाँ, फेमिनिस्ट।
वो सहाबी है, अल्लाह ताला आयत कुरान में उनके जवाब में नाजिल कर रहे हैं, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिनात मर्द मोमिनात औरतें, and the ayah is complete with 10 traits by addressing both the men and the women. Allah is responding to the genuine concern of a female companion why she's not being addressed. When Allah can address it, when Rasulullah is addressing it, who the hell are you, man? You are way lower than Allah and His Messenger, right? तो आपको अगर वुमेन एडवोकेसी के राइट्स आप बताएंगे तो इवेंचुअली वो रेडिकल हाईजैक मूवमेंट्स उन्हें नहीं ले जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पे उनको सिर्फ तनकीद करते हैं, अपने आप की रेट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, इवेंचुअली डिजास्टर सोल्यूशन हमारे सामने आता है। आखिरी चैप्टर जो मैंने अपनी बुक में रखा हुआ है वो ये रखा है कि इस्लामिक पैराडाइम क्या है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का, लेकिन वो Q&A में हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम अब Q&A पे जाता जा रहा है। तो अब आप बताएं इंशाल्लाह कि अच्छा ये टेबल भी इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। ये सेकंड फेव ऑफ फेमिनिज्म जिसने बहुत तबाही मचाई है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रेवोल्यूशन। एक किताब भी है लुइस पेरी की, लुइस पेरी इज़ अ फीमेल ऑथर, बहुत अच्छी किताब है, खासकर सिस्टर्स के लिए जो फेमिनिस्ट का फेमिनिन पर्सपेक्टिव से करना चाह रही हैं। द केस अगेंस्ट सेक्सुअल रेवोल्यूशन, द केस अगेंस्ट सेक्सुअल रेवोल्यूशन। उसका लुब-ए-लुबाब मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बुक में भी चैप्टर 2 में उसकी थोड़ी सी डिटेल है। वो ये है, अब थोड़ा फेमिनिस्ट से बाहर आ जाए, सेक्सुअल एथिक्स पे आ जाए। सेक्स, रिप्रोडक्शन, फैमिली, सेक्स, रिप्रोडक्शन, फैमिली, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियनडोम के अंदर तीनों मिले हुए थे। सेक्सुअल एक्ट, रिप्रोडक्शन, फैमिली, और ये रिलीजियस गाइडलाइन के अंदर होते थे। जब रिलीजन प्राइवेटाइज हुआ और सेक्युलराइजिंग बाहर फैलने लगा तो रिलीजन का वो जो रस्सी बंदी हुई थी वो खुल गई। सेक्स, रिप्रोडक्शन, फैमिली फिर भी थोड़ा थोड़ा करीब करीब रहा। It was considered awkward if you lose your virginity even in 19th century. Not because of the fear of God that is thrown out of the window, but socially awkward. समझ में आ रही है बात? शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान उस सोसाइटी में आ चुका है उस फेज में। रिलीजियसली कोई अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करता या कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन जनरली हम सोशली ऑकवर्ड हैं। वी आर ट्राइंग टू सेव आवर सेल्फ फॉर आवर स्पाउस, तो रिलीजियसली अब कंसर्न जाता जा रहा है। फिर ये हुआ 1960 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूरोपियन इम्पैक्ट, इकोनॉमी, वुमेन एट वर्क प्लेस, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिलीजन की रस्सी खुल गई है तो सेक्स, रिप्रोडक्शन, फैमिली, इसमें आहिस्ता आहिस्ता गैप आने लगा। और एक चीज हुई यूरोप के अंदर, बर्थ कंट्रोल पिल, वो आई। और पहले था वुमेन अगर कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाएगी तो उसे डर होगा, वो खाए अब कोई मसला नहीं है, बिकॉज शी इज कंट्रोलिंग हर फर्टिलिटी, क्योंकि मैन कैन रन अवे बट व्हाट विल हैपन टू द वुमेन आफ्टर कैजुअल रिलेशनशिप। तो उसने सेक्सुअल रेवोल्यूशन ले आया पूरा। टू टेल यू द नंबर्स, इट्स स्टैगरिंग। 1960 में इंग्लैंड के अंदर 9% बच्चे बगैर बाप के पैदा होते थे। 1960 में कितने परसेंट बच्चे? 2019 के अंदर 51% बच्चे बगैर बाप के इंग्लैंड में पैदा हो रहे हैं। गूगल इट, आप गूगल करें, फादरलेस चाइल्ड इन अमेरिका, फादरलेस चाइल्ड इन अमेरिका, नंबर बताएं मुझे पता है लेकिन आप लोगों को एक्सरसाइज कराना चाह रहा हूँ। फादरलेस चाइल्ड इन अमेरिका, नेट नहीं चल रहा, 18.1 मिलियन फादरलेस चाइल्ड। क्योंकि सेक्स को आपने, रिप्रोडक्शन, फैमिली, इनको रिलीजन से अलग कर दिया और फिर फैमिली से भी अलग हो गया। तो अब सेक्स इज इट्स ओन थिंग, इट्स नॉट कनेक्टेड टू मैरिज बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू चॉइस और कंसेंट। रिप्रोडक्शन आपको करना नहीं करना कोई ताल्लुक नहीं है। और फैमिली, यू कैन स्टिल बी अ पार्टनर्स एंड लिव पीसफुली, सही। और वी आर ट्राइंग, ये सारी चीजें आ गई। तो सेक्स फिर कनेक्ट हो गया चॉइस से, कंसेंट से और लव से। फिर लव भी हट गया। पोर्नोग्राफी क्या है? कोई सेक्स लव के साथ करता है पोर्नोग्राफी में? किसके लिए करता है? कैपिटलिज्म, सिर्फ मनी। अब ये बताएं किसका ज्यादा नुकसान हुआ इस चॉइस के अंदर? आई यूजुअली से दिस, इफ चॉइस is a biological choice of women, then if motherhood is a biological choice of women, then fatherhood is a social choice for men. तो ये एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन ले आया इस पूरी सोसाइटी में। आहिस्ता आहिस्ता हुआ ही है, पहले दिन से नहीं। रिलीजन का जोर टूटा, सोशल ऑकवर्डनेस खत्म हुई, फिर प्लेबॉय मैगजीन 1960s में आए थे, वो तेजी से फैले। कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप जो स्टिग्मा था वो खत्म हुआ। पहले आप ये कह दें कि मैं
इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ शादी के बगैर, इसको ऑकवर्ड समझा जाता था। रेडक्लिफ यूनिवर्सिटी अमेरिका से एक फीमेल स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया था क्योंकि उसका कैजुअल रिलेशनशिप था 40s 1950s में, और अब इसको लीगलाइज कर दिया गया है, प्रोटेक्ट कर दिया गया है, शादी को मुश्किल बना दिया गया है। और अब ऑब्वियसली ये एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि ये पैराडाइम कैसे हमारी शादियाँ मुश्किल हो गई है, क्योंकि हम गुलाम हैं वेस्ट के। वेस्ट में वो लोग स्कूल कुछ जॉब स्टार्ट करने से पहले सेक्स कर चुके होते हैं। हमारे माँ बाप हमें कहते हैं तुम्हें भी स्कूल जाना है और जॉब से पहले शादी नहीं करनी है, यानी जॉब से पहले तुम्हें हराम काम नहीं करना है, तो हलाल काम करने दें, नहीं वो भी नहीं करना है। समझ में आ रही है बात आपको? तो आप अपने बच्चे को ना हलाल खाने देंगे ना हराम खाने देंगे तो पागल हो जाएगा। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मैं अच्छा, बहरहाल ये एक लंबी डिस्कशन है, ये भी एक सेक्सुअल केओस, ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म से क्यों? सेकेंड वेव फेमिनिज्म वाज ऑल अबाउट फ्री लव मूवमेंट। जब मर्द कैजुअल रिलेशनशिप कर रहा है, हम क्यों ना करें? क्यों मदरहुड और फैमिली और इस चक्कर में पड़े? तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म वाज एंटी पेरेंटिंग, एंटी मदरहुड, और उसमें फिर ये पैराडाइम बहुत काम दिखा अपना। बहरहाल let's finish this because I know I will continue this in the 3 questions already. Oh, 4 questions, subhanallah. All from sisters? Okay. We'll take this inshallah because we spoke about feminism, and then we'll ask you inshallah. First, to what extent agency control shall be exercised as a parent? What's the role of giving choices and building intellectual abilities simultaneously? This is very important question. Very important question. We should not take the choices away from the kids. We are not talking about responding to one extreme from the other extreme. Allah have given them choice. Allah have given them agency. Allah have given them autonomy within a limit. They are not slaves. So we should not take the choice away. Rather, as a parent, we should exercise our right as a parent during the parenting so that they can make a right choices. Sometimes it requires more discipline. Sometimes it requires less discipline. Every father and mother knows their kids, their age, their environment, everything is going to make a factor. Like for example, at 7:30 a.m., if you're waking up your child, but at 7:15 a.m. you're not waking up for Fajr, but 7:30 a.m. you're waking up for school, this shows that you are making some definitely radical choices. Then on top of that, your child is saying that I won't brush my teeth when I wake up in the morning. It's my choice. I know what you are going to do as a mother. You will slap him or you will be strict. If your child says, I don't want to go to school, it's my choice. In America, you have to send your child to the school, any education pedagogical program, because they cannot make these choices because that's state-centered, so you have to enforce it. What I am saying, that you have to do the same thing when it comes to religious choices. But obviously, you have to be smart and you don't have to beat the hell out of them. And then next thing is that you will be everywhere on social media. Okay. But you have to encourage them to make a decision based on their own agency and choice. As Allah says, Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala have shown you 2 ways. Now you can take this route or that route. But in the early age, they don't know what kind of choices they need to make. 13 or 14-year-old cannot say, I need to cut off my genitalia because I'm feeling like other gender. You have to stop them. It's not like giving them choice and randomly they're making radical decision. Okay, not a question, but I disagree with the fact that external restraint will make your child more religious. External restraint actually changes your intention to you. Vary the hijab for your parents and then they become a rebellious young teen. Please consider this. Absolutely. You have your opinion and I'm so glad that you brought it up. Sometimes this can happen. But at the end of the day, you need to understand, if we don't have external restraint, then who is going to decide what is good and bad? Come back to the postmodern argument. Forget about religion, forget about hijab. You are saying that external restraints can cause us to become rebellious. You never become rebellious against the state. Why is that so? They put external restraints all the time. And even if you become rebellious, you cannot do anything to go against the state. Because your tarbiyah is done through a state-centered perspective. Your schooling, Netflix, Bollywood, Hollywood, whatsoever would, these garbage dramas of Instagram, all these are doing tarbiyah from the state-centered perspective. When they will put external restraints, you will never go rebellious against them because you have considered their authority as a final authority. If you will consider Allah's authority as a final authority,
Even external restraints will going to make you a better person and won't make you rebellious. That is okay. Is equality in husband and wife relationship is right or wrong? Equality, okay. How do we convince people who believe in my body, my choice? And okay, the second question. First question, is equality in husband and wife relationship is right or wrong? It's right and wrong, both. Right in the, there are few rights and obligations between husband and wife which are equal, which is they both have to give conjugal rights to each other, they both have to be respectful to each other, they both have to take care of each other. Then there are few rights which are exclusive for the wife and not for the husband, like the right of mahar, wearing gift, the right of taking care, nafaqah, providing accommodation, clothing. Men have to do this, but women don't have to do. And then there are few rights which are given to the men and not to the woman, the right to be obeyed in a Sharia-centric way. All these things we cannot put in the equality bubble. Something where rights are equality, something where rights are complementary. But equality in and of itself is not a virtue. That's what the point. The virtue is what Allah is saying and His Messenger have decided. Sometimes it's equality, sometimes it's complementary. But the reason why we give equality a humongous status is because it's coming from John Locke as a liberal father, as a founding figure of liberalism. He said we all are created equal, and from his book it came as a constitution in America, and now we all are living under American hegemony. But to say that equality is good in all the aspects requires Shari'i evidence. How do we convince people who believe in my body, my choice, and at the same time don't say this to the state, my money, my choice? You have to understand whether they will understand intellectual argument, emotional argument, but make sure you don't argue with them to win the arguments. You talk to them sincerely, lovingly, politely, without insulting them, without being disrespectful. Sometimes indirect advice will going to work, but make sure you don't use these arguments to push them away from Islam and from you. Oh, she wrote an entire thesis. The inequality that triggers women in a Desi society is when girls and boys are treated very differently in the same house. Absolutely, I agree. But both go to school, yet boys relax afterward and girls are forced to help in chores, and if they don't, they are judged. Some goes for spouses after marriage. Some goes for spouses after marriage. What does it mean? Huh? Same goes for spouses after marriage. Okay. How to deal with this? How to deal with this? Tomorrow I'm starting fiqh of family. Attend that in Shajara Institute. Okay. Because this is not a simple answer. This requires so much. It has so much nuances. So much nuances. Tell me, can a woman work in Islam? Okay. Very good. Don't give yes or no answer. Depends on many cases. Sometime, traditionally, men will going to work and will provide to the woman. Sometime, men will work and women will work. Sometime, that's a very Vela family. No, third cases where women will work and men won't work. Does that happen? What does our tradition say about this? Before you say anything, listen. Imam Ahmad ibn Hanbal, once in his life, his son actually narrates this. It's Salih or Abdullah. He said that once my father he was focusing on knowledge, or he did not have time to work or whatever, and my mother used to spin the thread, and we used to have a basic income while my father was not working. Yet they had a fabulous house, right? But is this by default practice? What Imam Ahmad did? Not by default practice, but general exceptions. Because Islam put general criteria and responsibility to men. But if woman is working, we should not judge her, because we don't know the financial situation of the household. Sahabiya, one of the Sahabiya, she, not Khadija because that's famous, but the other Sahabiya who was going through iddah, and she did not have any men to take care. She asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Abu Dawud, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if you have a need, go and work. Plant these seeds and all those things. So it means if a woman is going out to work, we know two women in the story of Surah Al-Qasas who were working. So we don't know their need, and we don't need to judge. Get a job. Keep yourself busy instead of judging others. Okay?
Where's that paper? Okay. Very sorry to say, men and women are absolutely equal according to Quran and Sunnah. Very good. Yes, their roles are different. Their physicality is different. What you are talking about, hierarchy, no hierarchy is only due to taqwa, qiwam, and what qiwam written in the Quran is due to spend his wealth. Otherwise, male dominancy is practiced around the world. We know only and only prophetic life and prophetic necessity, even balcony of Hazrat Hafsa still exists in Medina. Women emotional needs are much more than males. I have a lot to say in this topic, then I can write book on it. MashaAllah, absolutely, inshallah. No, we need this. We need this perspective. We need this disagreement. But how would you say in the Quran where Allah says, "Alaysa dhakaru kal unsa," men are not like female. Men are not like women. Male is not like female. Do you still say that Quran is wrong because you have made the equality paradigm? Or will you redefine your equality that in some time legislative equality is different than legal equality? And I hope I am clear. Legal equality, I agree with you. Legislative equality, no. You are not equal to men and men are not equal to you. So many times we make this false paradigm to understand Quran and Sunnah, and then we're going to see the ayat which are not coming in that paradigm. Then you're going to get confusion about the Quran and Sunnah. So we need to be very careful. It's very risky route. Uh, can women only work with permission of husbands, and in what areas can they work? Any restrictions as parents of work? I assume that it is after the marriage. They need the permission of husbands to work if there is no prenuptial agreement. In the Hanbali mazhab, I don't know about the Hanafi Shafi, I'm a Hanbali. And if there is no permission, then if she is working from home without getting distracted from the rights of the family, she can still work. But if there is no prenuptial agreement, if the working from home option is not there, if she have to work outside, and if husband says no, then you have two options. Either you can go out and work and stop taking nafaqah and still continue with the marriage, or you can just basically move on with the marriage if your husband is not supporting you, and if you think you need to work because your husband is not fulfilling your right of providing. So there are many multiple ways of going based on different scenario. Okay, is there another question? Okay, now yes, please go ahead. Any question? Done, mashallah. Yeah, tell me. As you already know, this age there's quite a short attention span. So how do we, concentrate on actually buying the book and then having the motivation to complete it? Because I think with such small short videos and stuff like that available, it's quite hard to concentrate on a book. You don't need to. These things are those who are confused. If you're not confused, this is garbage. Wallahi, when I'm writing these books, I said that why I'm writing this even. But as Imam Ghazali says, that these things are those who are spiritually sick people. If you are not sick with these philosophies, you don't need to go. For masses, for the children, they don't need to get exposed to these things. Wallahi, my family wanted to come today, but I have a policy. Whenever I teach isms, I don't take my kids. They already attended one detailed ism 16-hour class with me, and I told them, you are not coming in isms class because for kids, for masses, you don't need deconstruction, you need construction. Deconstruction is only required for those who are confused about Islam and they are confused about the framework, and they have these problems, aqidah problem. Huh? Da'is who want to convince others. But if you are one of those masses who want to live the life and you are not exposed to these premature philosophies or man-made sentiments, you don't need to study these things. These things doesn't give you any spirituality. How many ayat or hadith I quoted in last 1.5 hours? Almost none, instead of just 1, 2, 3 ayat. So it's only deconstruction. This is postmodern way of looking at this, by the way. If you remove the ayat which I quoted in Islamic principles, all of this is going back to the roots and deconstructing that. So I use postmodern way of critiquing the feminism. Yes. To what age parents are obliged or has liability to teach son or daughters in terms of akhirah? If a
child is 24 years. Yeah. If he's on other side, Hmm. parents are responsible or his own. See, parents are responsible. Then, in terms of age, your style will be different. 24 years have his own accountability. He's not minor anymore in Islam. Say 18 plus. Yeah. So you have a responsibility, but then the approach will be indirect instead of direct. If you're talking to 24-year-old, you cannot just directly hammer him all the time. As compared to, let's say, you're talking to a 12-year-old, then you are going to remind him, wake him up for Salat al-Fajr. Why didn't you pray Salat al-Fajr? So your style will be different based on age, based on your relationship with the child. But remember, you have a responsibility and you have to do as best as you can. And then if Allah decides something else for your kids, then we have the example of Nuh alayhi salam in the Quran. So just keep saying at the last moment, Ya bunay irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. That's your role. That's your role. Any other question? Yes. आपने बहुत सारी बातें की, too many things or ideas, और एक और बात की कि the pendulum swing, इस तरह के extreme पे चले जाते हैं उस extreme पे. You also said कि ये किताब लिखी इसके बारे में analyze किया लेकिन बिगाड़ दिया आपने बहुत. नहीं, मैंने नहीं कहा. मैंने कहा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इल्ला कि आप उस चीज से मुतासिर हो रहे हो. तो मतलब अगर आपको ये लगता है कि आप पेंडुलम किसी और तरह में, पता नहीं अभी किस तरह स्विंग करेंगे, आप ये कौन सी नई चीज लेके आएंगे, और आप ये भी कह रहे हैं कि इन चीजों में पढ़ो ही नहीं, फिर हम इसको काउंटर कैसे करें? वेयर डू वी स्टार्ट? हम फिर जो आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर अपनी एक चीजों के ऊपर चलते रहें, फिर इनके ऊपर ध्यान ना दें. अच्छा, इसकी सिर्फ ये कि अगर आप मुस्लिम, मुझे पाकिस्तान का इन्वायरमेंट नहीं पता कैसे चेंज हुआ है. अगर आप अपने बच्ची को ये बताते हैं कि बेटा तुम्हें हिजाब पहनना है, और तुम मर्द हो, तुम्हें फैमिली के राइट संभालने हैं, और उनके पास कोई सवाल नहीं है क्यों करना है, हाँ ये हमें दिए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, माँ को 3 गुना ज़्यादा हक दिया है, वगैरह वगैरह. तो अगर कोई सवाल नहीं आ रहा इक्वालिटी वगैरह, इसका मतलब है दे आर नॉट एक्सपोज. व्हाई डू यू वांट टू प्रीमेच्योरली एक्सपोज योर किड्स? लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में गए, दैन मोस्ट लाइकली दे आर एक्सपोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो फिर आपको इस चीज़ों की ज़रूरत होगी. लेकिन अवाम उन्नास, रेडी वाले से लेकर मासी तक, आप दे आर नॉट एक्सपोज टू दीस थिंग्स. दे आर वर्ल्ड फॉर देयर ब्रेड एंड बटर. If you'll expose to them prematurely while they have not even read Quran, then you're messed up with the priorities. That's what I was saying. But if, like you are here, like I'm discussing, we marketed this event because it's an important topic for a particular audience. लेकिन philosophy आम तौर पे usually हर एक को पढ़ानी नहीं चाहिए क्योंकि they are not exposed. Why you are giving them that medicine? So if you think that this will be beneficial, and for some I know that this will be beneficial. कि मैंने पहली बुक लिखी थी जेंडर इंटरेक्शन पे, फिर मुझे पता चला नहीं यार इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से भी, फिर मैंने LGBTQ पे दूसरी किताब लिखी. इसके बाद मैं लिख रहा हूँ जेंडर वॉर्स पे, सारी बुक जेंडर पर है. तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं, इस बुक को सही तरह कन्वे नहीं कर सकते तो ये टॉपिक कम्युनिकेट नहीं होगा. लेकिन क्या हर एक को ये राउट लेने की ज़रूरत है? नहीं, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन जेंडर्स एंड फेमिनिज्म एंड मैस्कुलिनिटी एंड रेड पिल. अब मुझे पता है कि इंसान का ईमान नहीं बढ़ाती है, सिर्फ आपको ये बताती है कि इस्लाम हक है. तो आपको अगर पहले पता है इस्लाम हक है तो आप बातिल पे ध्यान ही ना आते हैं, आप इस्लाम के. बिकॉज मैनी अ टाइम्स वी वेस्ट अवर टाइम इन नोइंग द थिंग्स विच वी डिसलाइक इंस्टेड ऑफ नोइंग द थिंग विच वी लाइक. ये बहुत ज़रूरी है. वी शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन द थिंग्स इन विच वी लाइक अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, एंड बट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द थिंग्स विच वी डोंट लाइक. लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ज़रूरी है. यस. और हर चीज जो है उसी के ऊपर ही चल रही है. फॉर एग्जांपल द मेन कंसेप्ट आर स्कूल, हर सारी चीजें आ रही हैं. तो वो लिमिट तो है. इट्स नॉट लाइक कि मेजॉरिटी आर नॉट इनटू दिस प्रॉब्लम. आई थिंक मेजॉरिटी आर बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस इज सो इजी अवेलेबल. अब बच्चों को हर तरफ से सारी चीजें देनी मिल रही हैं, उनको पता ही नहीं होगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. जो कांसेप्ट जो हो रहा है वो एक वेस्टर्न नैरेटिव तो आ रहा है कहीं. तो अगर हम उसको बच्चों को पहले से नहीं बताएंगे तो हाउ दे कैन अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, वी डोंट एक्सप्लेन द डेफिनेशंस, लेकिन कांसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Absolutely. Means if you can avoid these terms but still inculcate this concept, I would prefer that for the kids. Kids don't need deconstruction, kids need construction, because वो डो की तरह होते हैं. उर्दू समझते हैं ना आप लोग? अब देखते हैं कितनी समझते हैं. तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को,
हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर दे. We need to put, I think this is Iqbal or Akbar, I don't know. But kids are like dough. आटे की तरह उनको कहीं भी आप फेर दें. तो I think kids don't need this deconstruction. Teenagers जो college में हैं, TikTok पर addict हुए हैं, वो I think इससे influence होंगे. तो उन्हें बताने की ज़रूरत है. मैंने खुद अपने बच्चों को बताया है, लेकिन मेरी क्लास में का हिस्सा था 2 साल का उन्होंने कोर्स किया, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा अपने बच्चों को रिपीट करूँ कि फ़लसफ़ा आपको अमल से दूर कर देता है. You have given some preemptive that applies that manifested feminist mentality in a woman. Can you give like 1 or 2 basic principles that manifesting toxic masculinity or in a man in his body? Yeah, many. Superiority, dominance, aggression, ये सब रेड पिल मूवमेंट के अकायद हैं. Superiority versus leadership given by somehow you differentiate between. No, I wouldn't use the word leadership. I would use the word guardianship. The translation of qawama is not leadership. Because when Allah says الرجال قوامون على النساء, guardianship have both the things, responsibility and authority. Because leader have only authority. Means it have that word. If you go by the postmodern mindset, you can disagree with me because disagreeing with definitions. But guardian have both responsibility with authority and authority with responsibility. So that's a better translation. الرجال قوامون على النساء. When you are going to show dominance, that I am better than you in terms of moral worth, then obviously that's a problem. I should get this. And most of the end-use of today's social media are actually conserving Western masculinity. So they have a framework. If anything go against that framework, that's wrong. Do you believe that a man should have haya? Absolutely. Have you seen Andrew Tate? Sorry. I don't think so that he came in shirt for the last 3-4 videos, right? Because when we are speaking about Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he had the most haya in one of the narration. So compare that, because Islamic or prophetic masculinity is very different than toxic masculinity. Similarly, standing up for what is right. Sometime as a real man, Ja'far as-Sadiq, Imam Ja'far as-Sadiq said that a real man is not the one who is thankful to when you give something to him. Rather, a real man sacrifices that thing when you give him for others. So as a real man is all about sacrificing for the people under you, and that includes women. And the real men are the men of sword, right? Now we are only feminized masculinity. That's why the ummah is in this situation. So there are many things which we can drive from the. I don't have time to go into the 4th and 5th chapter of my book. Otherwise, you would have discussed this. It's not published yet. Divine gender solidarity versus man-made gender wars. And I know that I'll be cancelled left and right with this book because I already said that I want to take early retirement. So when my LGBTQ book came out, 2 of the hijabi sisters called my masjid, and they said to my masjid administration that fire this imam because he's spreading hate. At that time, I was just a volunteer imam. So the masjid said we cannot fire him because we didn't even hire him. Okay, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.